For even and odd function, please draw the unit circle. See, this is your unit circle, and this one is the positive direction, anti-clockwise direction. This is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree. Also in the unit circle, this coordinate is called 1, 0. This coordinate is called minus 1, 0. This one is 0, 1, and this one is 0, minus 1. And in the unit circle, x coordinate is called cos theta and y coordinate is called sin theta. And theta is the angle with positive direction of x-axis. So this point is called 0, 1 as well as called cos 90, sin 90. This point is called minus 1, 0 as well as it is called cos 180, sin 180. This point is called 0, minus 1 as well as it is called cos 270 degree, sin 270 degree. And this point is called 1, 0 as well as cos 360 degree, comma sin 360 degree. क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री बनता है, यहाँ पे पूरा 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 180 बनता है, यहाँ पे 270 बनता है और घूम कर यहाँ पे आते हैं तो 360 बनता है. ओके, तो यहाँ से हम कंपेयर करके वैल्यू लिख सकते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 180 is minus 1, and cos 270 is 0, and cos 360 is again 1. Y coordinate लिखेंगे, sin 0 is 0, sin 90 is 1, sin 180 is 0, sin 270 is minus 1, and sin 360 it is again 0. This is the anti-clockwise direction, positive direction. Now this one is the clockwise direction. This is called 0 and this one is called minus 90 degree. This is called minus 90 degree. So this is the minus 90. This is called minus 180 degree. This is minus 180 and this is called minus 270 and घूम कर यहाँ पे आते तो minus 360. Okay. ये पॉइंट जो यूनिट सर्कल पे है वो तो ऐसे रहेंगे 1, 0, ये minus 1, 0, ये 0, 1 and 0, minus 1. This point 1, 0 is also called cos 0, sin 0. This minus 270 degree, this point is 0, 1 is again called cos of minus 270 degree, comma sin of minus 270 degree. This point is minus 1, 0 as well as it is called cos of minus 180 degree, comma sin of minus 180 degree. This point is 0, minus 1, it is also called cos of minus 90 degree, comma sin of minus 90 degree. So यहाँ से हम पूरा, और this point is also called cos of minus 360, sin minus 360. So यहाँ से x coordinate देखेंगे, cos 0 is 1, cos minus 90 is 0, cos of minus 180 is minus 1, cos of minus 270 is 0 and cos of minus 360 is again 1. Y coordinate लिखेंगे, this is the clockwise direction, negative direction. Sin 0 is again 0, sin minus 90 is minus 1, sin minus 180 is 0, sin minus 270 is 1 and sin minus 360 is 0. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो cos 180 की वैल्यू minus 1 है, यहाँ पे देखो cos 180 is minus 1 and cos minus 180 is minus 1. मतलब नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता. cos 360 देखते हैं तो 1 होता है, cos minus 360 देखते हैं तो भी 1 होता है. मतलब ये हुआ cos of minus theta equal to cos theta, that is the cos is even function. And अभी sin में देखते हैं तो sin 90 is 1 and sin minus 90 the minus 1, sin minus 90 the minus 1, sin 270 e the minus 1 and sin minus 270 is 1. तो यहाँ पे एक माइनस का फर्क पड़ता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन. कॉस इज इवन फंक्शन, इसमें माइनस रखो या प्लस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता. साइन इज ऑड फंक्शन, इसमें माइनस रखते हैं तो माइनस बाहर निकल जाता है. तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. सो कॉस माइनस 180 ले लो या कॉस 180 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन साइन माइनस 90 लो और माइनस ऑफ साइन 90 लो सेम रहता है. तो इसमें एक माइनस का फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता. तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, जिसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ता. जिसमें माइनस का फर्क पड़ता है इट्स कॉल्ड ऑड फंक्शन. tan of minus theta is sin of minus theta upon cos of minus theta. Sin of minus theta is written as minus sin theta upon cos theta. It is minus tan theta. That is tan of minus theta equal to minus tan theta. So tan is also odd function.
cot of minus theta equal to cos of minus theta upon sin of minus theta. That is cos theta upon minus sin theta. Cos is even function and it is minus cot theta. मतलब cot is odd function. Cot of minus theta equal to minus cot theta. Sec of minus theta equal to 1 upon cos of minus theta equal to 1 upon cos theta and it is sec theta. मतलब sec में minus का फर्क नहीं पड़ता. Sec is even function and cosec minus theta equal to 1 upon sin minus theta equal to 1 upon minus sin theta equal to minus cosec theta. तो cosec is odd function. तो दो फंक्शन ही ऑड है. कौन कौन से? एक cos फंक्शन ऑड, दूसरा sec फंक्शन. दो फंक्शन ही इवन है. कौन कौन से? तो एक cos फंक्शन इवन है और दूसरा sec फंक्शन इवन है. cos फंक्शन इवन है मतलब cos of minus theta equal to cos theta and sec is also even function. sec of minus theta equal to sec theta. बाकी सब ऑड फंक्शन है. कौन कौन से ऑड फंक्शन? tan of minus theta equal to minus tan theta. tan is odd function. cot of minus theta equal to minus cot theta. cot is odd function. cosec minus theta equal to minus cosec theta. cosec is also odd function. तो दो फंक्शन इवन है, cos और दूसरा कौन सा? sec. और बाकी तीन फंक्शन ऑड है. कौन कौन से? tan, cot एंड cosec.